We don't need the politician in city, because city politics should be bipartisan. If the politician will come, they will put their agenda. Like every politician is busy to get some nomination and all that. They are not working. They are drawing their salaries. And many, if you go sometimes City Hall, I went to get a chance couple of times. They're talking about politics, what's happening at the federal level, what's happening at the provincial level. Why are you not talking about Brampton? Why are you talking about the parks? Part 10, we have only one recreation center, Gormedo. And after Gormedo, what recreation center we have? This is not a recreation center, this is soccer center. And another we have at Peter Robertson and Sunny Meadow. So, city is growing. City population is growing. Why are not bringing the facilities to the residents? And hospital, yes, second hospital. Even the second hospital will not cater the needs of the growing population in Brampton. At least we need 3 hospitals in Brampton, not 2. At least we need 3 hospitals. So basically they are not working toward that, because we residents, we want to work with the city. We want give the better facilities to our residents, but city is busy in some other stuff, not doing what the people need. So city staff job, the council job is to work for the betterment of city of Brampton. We are not like the city council. They don't let us for 5 seconds more. No, we are requesting city of Brampton. Let's sit together and pass this program until you have a in-person town hall meeting every ward. Let's listen every Brampton, because the problems are everywhere. So again, I will give mic to Ravi, and Ravi will add something. Thank you. Every single point you guys supported us, and without your support, probably we were not able to get the success so far which we have achieved so far. And we should not forget about that, because I'm a different type of the person who go with the points and measure by the certain the points, because what battle I am starting it, what is the defining my problem statement, and what action we are taking it, and how we are measuring the success. And I'm going to be shedding, because most of the points which Raji has already discussed about that, I'm not going to be repeating the step, but I will be add some stuff over there. But I will be helping to measure that, because what we have achieved so far. It's not that, because we should not be disheartened that it's coming back and we are lost. No. I mean, if you look the version which was launched on the January 1st and the version which is right now, it's a tremendously different. A legal dwelling without any modification, which is like calling the law-abiding citizens. Because who is not a law-abiding citizen may not be here standing here. The people who are standing here, they are only concerned, they are the law-abiding, they already have the legal units. These are the people who are standing there. Because the person who is already breaching the city law may not be coming in forward, and they will be not be... someone gave me the paper, because that's the application. In that one, there is a consent document where that landlord will permit that the home inspection with because earlier there was a point that without notice, that the white without notice point is gone. So, but they were still asking the consent. I think that's the whole purpose of this RRL. The whole RRL, which I thought to, the city is always giving the argument that because why they are bringing it, so they can avoid the warrant. They will have to take it from the court, which taking a time taken process. Now, with this letter or with this consent, they can ask you for the, they can overcome that the warrant procedure, and they can do the inspection of your properties, right? You know, it seems that Dr. Goya always likes to pull me on Family Day, Easter. My wife is waiting for me to go to Kingston. I'm here with you guys instead, but that's okay. I'm happy to be here. You know, members of council understand, and it is precisely why, instead of putting in place a bylaw immediately, we decided that it would be wise to begin with a pilot program. We, as members of council, were compelled to act because we have
issues in the city of Brampton that require our attention. What would you say of members of council if we did nothing and allowed these problems to continue? Now, all of you, as law-abiding and law-respecting landlords, you understand that at all times, when you make a decision to rent out your home or part of your home, you are embarking on a journey which you all understand. At all times, there are many rules and regulations that apply to you in all circumstances. And usually, we don't have a problem. You know, my mother, I remember when I was a kid, she used to rent out a condominium. And she collected the rents, and they lived there, and when they needed the taps fixed, she would send me to go fix them, etc. and so forth. But when we get into issues where, in parts of the city, we have 8 cars on the driveway, we have property standards violations all over the place, we have other bylaws that are being contravened, you come to realize that there is a lack of understanding by some landlords that there are rules that apply at all times. Some of them are property standards, others are safety related, others are related to building code, etc. We all understand the variety of different issues that can come up. So it becomes the responsibility of the city, and as representatives, we act on behalf of you and the city, of all the people, to get our hands around the problem. And how is it that we can ensure that at all times, a landlord, for example, could be Dr. Goyat, is following all the rules at all times? We speak to him and say, hey, do you know about this? Do you know about this, etc.? And he goes, yeah, oh, I didn't know about this. Well, now we've had that conversation, and now he's going to be the perfect landlord. But we have so many other individuals, it's impossible. Sometimes we have the complaints, and we don't even know who the owner is. Right? And so it becomes problematic. So how do you get everyone involved, everyone in the community, to agree that they're going to follow a set, not just one rule, but a set of many rules? That's where a licensing program comes into place. It's not an additional bylaw. It is, in essence, a regime that all players are agreeing to comply with. And so it's no different, for example, if you're a taxi operator, or perhaps you own a dog grooming company. You obtain that business license, and through the obtaining of the business license, you are agreeing from day one to follow the set of rules that must be followed. देखिए, आज हम यहाँ जो है ब्रैम्पटन सॉकर सेंटर है, जो सेव मैक्स सेंटर, आज इकट्ठे हुए हैं, और हमारा जो यहाँ पे जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, ये था आरआरएल। हम बेसिकली आरआरएल को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम पहले दिन से ये कहते हैं कि भी आरआरएल से कोई सिटी को स्पेशल टूल नहीं मिलना, कोई भी स्पेशल टूल नहीं मिलना। अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे वो ओवर क्राउडिंग की सॉल्यूशन है, चाहे गार्बेज की है, चाहे वो पुअर प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड की है, उसका सॉल्यूशन एक ही है कि एनफोर्समेंट। सो सिटी ऑफ स्टाफ को हमने एक ये आस्क किया है आज काउंसिल विसेंटे के थ्रू कि भी हमें इन पर्सन एक मीटिंग टाइम चाहिए सिटी स्टाफ के साथ और होल काउंसिल के साथ। हमारे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं जो हम सिटी को एक कन्विंस करेंगे भी आरआरएल की ज़रूरत ना हो के जो बाकी चीज़ें जो सिटी ने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो टेनेंट का एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए, और एक ऐसा पोर्टल, फ्री पोर्टल लागू करना चाहिए जिस पे कोई बाइंडिंग नहीं है कि लोग रजिस्टर करें। और इस आरआरएल प्रोग्राम से जो प्रॉब्लम है, जो सिटी बोलता है भी इलीगल डिवेलिंग्स का, नॉन कंप्लाइंट डिवेलिंग का, वो सोल्व नहीं होने वाला। ये जो आरआरएल प्रोग्राम है, ये जो ऑलरेडी जो कंप्लाइंट लैंडलॉर्ड हैं, कंप्लाइंट होम प्रोवाइडर है, उन्हीं को ही कंप्लाइंट करने का एक प्रोग्राम है। तो हम सिटी ब्रैम्पटन से आस्क किया है यहाँ पे कि दिस प्रोग्राम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, देयर आर मैनी बेटर प्रोग्राम वी कैन इम्प्लीमेंट। और साथ में आज जो है आरआरएल ज़रूरी नहीं है, ब्रैम्पटन को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आप देखो कार थेफ्ट, रॉबरीज, है ना,
एक्सटॉर्शन, कितनी यहाँ पे क्राइम का इतना 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 हद हो चुकी है, उसके तरफ इन सिटी का ध्यान नहीं है, उसकी तरफ से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, और हेल्थ केयर जो इमरजेंसी में है उसकी तरफ जो है ध्यान नहीं है। और जो यूनिवर्सिटी है, एक 8वां बड़ा सिटी होते हुए ब्रैम्पटन यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, इन मुद्दों के बारे में कोई नहीं बोलता। एक RRL कहते भी RRL ही जरूरी है ब्रैम्पटन के लिए, जबकि जो नेबरिंग प्रोविंस अपने सिटीज़ हैं, मिसिसागा में ये नहीं है, टोरंटो में ये नहीं है, वान के अंदर ये नहीं है, कैलेडन में ये नहीं है, बोल्टन में ये नहीं है, तो हमें ब्रैम्पटन में ही क्यों चाहिए? देयर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। और इस RRL से मैं दोबारा से कहता हूँ, कोई हासिल नहीं होने वाला, इसे वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर मनी, और दैट मनी शुड बी यूटिलाइज टू हायर मोर बायलॉ ऑफिसर एंड टू मेक द सिटी कंप्लाइंट। थैंक यू। देखो जी, जो आज हमारी RRL के ऊपर मीटिंग आई है, और ये मैं इस मीटिंग को काफ़ी सक्सेसफुल बोलता हूँ, और इस मीटिंग के बीच में फर्स्ट टाइम ये मैं से थर्ड विन बोल रहा हूँ, क्योंकि पहली हमारे पास 2 विन हम कर चुके हैं जब हमने पहली बार प्रोग्राम को पॉज करवाया। अब उसके बाद में उस प्रोग्राम के बीच में काफ़ी रिफॉर्म्स लेकर सिटी को हमने जो हमारे कंसर्न थे उनको एड्रेस करने के बाद में एक नया वर्जन लेके आए हैं। जो अब उस वर्जन के बीच में हमारे करीबन 60% जो कंसर्न हैं वो एड्रेस हो चुके हैं। अब आज की जो मीटिंग थी वो हम ये बात डिस्कस करने के लिए थी कि अब हम एक आफ्टर मैथ करें कि जो हमारी 3 महीने की स्ट्रगल चल रही थी, उस स्ट्रगल के बीच में हमारे क्या क्या पॉइंट्स थे, कौन से पॉइंट हमारे एड्रेस हो चुके थे। हमारे 7 पॉइंट थे, जिसके बीच में हमारे 4 पॉइंट्स जो हैं वो सिटी ने ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुकी है, लेकिन 3 पॉइंट आउटस्टैंडिंग हैं। और आज हमारी थर्ड विन इस मीटिंग के बीच में ये थी कि आज तक हमारी कभी किसी मीटिंग के अंदर सिटी इलेक्टेड ऑफिशियल्स नहीं आए, लेकिन वी रियली थैंक फॉर टू दी पॉल वसेंटे, जो कि हमारी इस ओपन मीटिंग के बीच में एड्रेस करने आए, और उन्होंने हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। लेकिन हम पूरे क्वेश्चन से आंसर से सेटिस्फाइड तो नहीं हैं, लेकिन हमारे जो 3 आउटस्टैंडिंग कंसर्न हैं, जिसके बीच में ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड की और जो हाउसिंग प्रोवाइडर की बिना कंसेंट के अगर टेनेंट अगर ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन अराइज कर देते हैं, तो उस केस के अंदर हाउसिंग प्रोवाइडर उसे कैसे डील करेगा। RRL के बाद में जो हम बोल रहे हैं कि जो पायलट का जो है उसका बीच में दायरा भी छोटा किया जाए, उसका टाइम फ्रेम भी छोटा किया जाए, क्योंकि अगर प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता तो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो वेस्ट ना हो। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि कई बार जब हम लीज एग्रीमेंट बनते हैं उसके बीच में कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो टेनेंट के ऊपर जाती हैं। अगर वो टेनेंट के ऊपर जाती हैं तो सिटी उस केस के अंदर अगर प्रॉपर्टी को टिकट देता है तो हम उस पर्टिकुलर पेनल्टी को, जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के नीचे वो टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किस तरीके से हम टेनेंट को वो पास ऑन कर सकें। इन सब की इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमारी डिस्कशन होनी बाकी है, और मैं इस चीज़ से पूरी तरह मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि सिटी हमारे साथ काम करेगी और इन तीनों पॉइंट्स को भी एड्रेस करेगी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, ब्रैम्पटन वासियों ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ RRL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕੀ ਆਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਪੌਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ RRL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਟੈਨੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲਾ ਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਲੀਗਲ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ $300 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਤੀਏ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ 6 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਟੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।